Hello dear students, here I am Dr. Jasleen Kaur with another video on preparation for common entrance test of B.Ed in Punjab. Now today we are going to focus upon the general awareness aspect with special focus on the education and the government policies on education. So let us see what all we need to prepare for this. तो एजुकेशन के बारे में जब प्रिपेयर करना है हमें एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है प्रिवेलेंट उसके बारे में पता होना चाहिए. दिस वुड इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी टू द हायर एजुकेशन. व्हाट आर द रोल्स ऑफ वेरियस एजुकेशनल बॉडीज जैसे यूजीसी है, एआईसीटीई है, एनसीईआरटी है, एनसीटी है. तो इनके क्या रोल्स हैं, फुल फॉर्म्स क्या है. जैसे यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और वेरियस लेवल्स पे कौन सी बॉडीज जो हैं वो काम करती हैं. जैसे यूजीसी हायर एजुकेशन के लिए रूल्स एंड लॉज बनाती है. तो ये सारा प्रिपेयर आपने करना है. उसके बाद इसमें एक सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं. विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. ऑप्शंस हैं एनसीईआरटी, एनसीटीई, यूजीसी एंड एआईसीटीई एंड द करेक्ट आंसर हियर इज यूजीसी. Next, focus on the educational policies and programs introduced by the government. Important policies include like NEP, National Education Policy, 2020 में ही आई है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान and recent reforms in education sector. जो भी recent reforms चल रहे हैं उनके बारे में स्टडी कीजिए. एक सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं. Which policy aims to achieve universalization of elementary education? Is it RAMSA, SSA, NEP or RUSA? And the correct answer is SSA. Moving on, we have historical development of education in India specifically. So you should understand what is the historical development of education in India, which would include the ancient period, the medieval and the modern periods. Now, who all were the significant educational thinkers like Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and what were the landmark events which were associated with these personalities, like for example establishment of different universities and the evolution of school systems in India. Let us take a sample question and it will be clearer. Who is known as the father of basic education in India? A. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, B. Rabindranath Tagore, C is Mahatma Gandhi, D is Swami Vivekananda. And the correct answer here is Mahatma Gandhi. Then familiarize yourself with the educational philosophies and thinkers. Like key philosophies include idealism, realism, pragmatism, existentialism, and how the principles and rules of these philosophies they are applied in education, and who all are associated with these different schools of thought like realism, pragmatism, existentialism. कौन कौन से एजुकेशनल थिंकर्स इनके साथ एसोसिएटेड है आपको पता है. जैसे गांधी जी आइडियलिज्म के साथ हैं तो बाकी के भी आपने एग्जांपल्स प्रिपेयर करने हैं. एक सैम्पल क्वेश्चन रहेगा. विच फिलॉसफी एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड द एनवायरनमेंट. आइडियलिज्म, रियलिज्म, pragmatism, existentialism, and the correct answer is pragmatism. Please pay attention to educational statistics and surveys in India like the ASER, that is Annual Status of Educational Report. Then we have AISHE, that is All India Survey on Higher Education. We have National Achievement Survey, NAS. So ये सब surveys कैसे किया जाते हैं और what insights they give us into the literacy rates of the country, enrollment ratios, dropout rates, and all other crucial important metrics they are providing. वो आपने स्टडी करनी है. एग्जाम्पल लेते हैं. Which survey provides annual statistics on the state of education in rural India? Is it NAS? Is it AISHE? Is it ASER? Or is it an NCERT survey? The correct answer is ASER, that is Annual Status of Education Report. Lastly, please stay updated on the current issues and trends in education, such as digital learning, inclusive education, vocational training, and challenges faced by educational sector during the pandemic.
तो कोविड 2020 का बड़ा इफेक्ट रहा है, उसके बारे में उसमें क्या चैलेंजेस आए हैं और क्या हमने रेमेडियल मेजर्स लिए हैं, वो भी थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए। एक सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं। Which recent initiative focuses on integrating technology in school education in India? Is it Digital India, E-Pathshala, Sarv Shiksha Abhiyan, National Digital Library? And the correct answer here is E-Pathshala. Now let us move on to the second aspect, that is the government policies of education in India. You will prepare all the important policies which have been made in India. Especially, we will start with the NEP 2020, National Education Policy. This policy, we know, it aims at overhauling the Indian education system. तो पूरे Indian education system को change करने का इसने जो बीड़ा उठाया है, and it is introducing 5+3+3+4 system. इसमें क्या होगा? Students will be spending 5 years in strengthening their foundation, 3 years in preparatory stage, 3 years in middle stage, and rest 4 years in secondary stage. And this policy is also emphasizing on early childhood care and education. It also aims to integrate vocational education with the general education, and it has a lot of emphasis on a multidisciplinary approach to learning. So let's take a sample question. What is the new school educational structure proposed in NEP 2020? Options are 10+2, 5+3+3+4, 6+4+2, 8+4. And the correct answer is B option, 5+3+3+4. Talk about the Sarv Shiksha Abhiyan, which was launched in 2001-2002. It is an initiative which is aimed at universalization of elementary education, and it focused upon providing free and compulsory education to children aged in 6 to 14 years of age group. So इसके बारे में आप सबको पता है, एक सैम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं. Which government scheme aims to achieve universalization of elementary education? Is it RAMSA, SSA, RTE, NEP? The correct answer is SSA. Move on to Right to Education Act, which is also very important, launched in 2009. It mandates free and compulsory education for children between ages of 6 and 14. It lays down the minimum norms for elementary schools and outlines the rights of children to receive quality education. So ये बड़ा ही important right है. एक question देखिए इसमें. Under which act is education a fundamental right for children aged between 6 to 14 years? So ये हमारा fundamental right बन चुका है, और ये कौन सा act हमें दे रहा है? NEP, SSA, RTE Act और RMSA. So it is answer C, RTE Act, Right to Education Act. फिर इसके बाद आप RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके बारे में पढ़ लीजिए. ये मार्च 2009 में लॉन्च हुआ था. ये भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे जोर डालता है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्पेशली सेकेंडरी लेवल पे उसको इम्प्रूव करने की बात करता है बाय इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन, कि सब लोग सेकेंडरी एजुकेशन ले पाए. एक सैम्पल क्वेश्चन देखिए. विच स्कीम एम्स टू एनहांस एक्सेस, एक्सेस होता है पहुंचना, है ना, ले पाना, टू सेकेंडरी एजुकेशन एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी? इज इट SSA, इज इट RMSA और RUSA और NEP? एंड द करेक्ट आंसर इज RMSA. Then you should be aware about RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, launched in 2013, which was again launched by the central government. And इसका एम था कि फंडिंग देनी है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री उनको, एंड दिस वाज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड प्रमोट इक्विटी एंड एक्सेस टू हायर एजुकेशन. सबको इक्वली हायर एजुकेशन अवेलेबल हो, इस पे जोर देता है. रूसा भी कहते हैं इसको हम शॉर्ट में. तो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन की लेते हैं. विच स्कीम इज डिजाइंड टू फंड स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी? Is it NEP, is it RMSA or RUSA or SSA? And the right answer is RUSA, that is राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. मिड डे मील के बारे में सबको ही पता है. मिड डे मील स्कीम ये लॉन्च हुई थी अगस्त 15, 1995 को, and it provides a free lunch to students in primary and upper primary schools on working days. ये जो स्कीम है इसने न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चों का इम्प्रूव किया है और स्कूल में अटेंडेंस भी इंक्रीज की है. चिल्ड्रन कम टू स्कूल फॉर हैविंग अ नाइस मील,
तो उससे अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई है। एक सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं। Which scheme provides free lunches to students to improve nutrition and school attendance? Is it SSA, RMSA, midday meal scheme, or RUSA? And the answer is midday meal scheme. The next important provision is National Program for Education of Girls at Elementary Level, NPEGEL, launched in 2003. Now this program, it was aimed at enhancing the education of girls. तो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए है, पर्टिकुलरली जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज की हैं जैसे SC/ST की, और इसमें कोशिश करते हैं कि जेंडर गैप जो बॉयज और गर्ल्स की एलिमेंट्री एजुकेशन में है उसको रिमूव किया जाए। एक सैम्पल क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम स्पेसिफिकली टारगेट्स एनहांसिंग द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट द एलिमेंट्री लेवल? Is it SSA, NPEGEL, RMSA, or RUSA? And the correct answer is NPEGEL. Dear students, I hope this video was useful for you to understand what all areas you need to focus while preparing for general awareness, section education, and national policies on education in India. So please be very sure you understand all the policies, what are the objectives of the policies, what changes have been introduced in the country due to certain policies. And please prepare the multiple choice questions properly. Wish you all the very, very best. Thank you so much.